मलेशिया की बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है विमेन लीडर्स की। आई हैव सीन CEOs, I have seen mid-level managers. I have also seen women driving a lorry with a 40-foot container. It's up to the individual how you want to live your life or what value system that you follow. But people are not going to judge you for that. कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें there is a potential कि पाकिस्तानी जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं मलेशिया में? We struggle to find a value added या high value product portfolios. आप यहाँ पे आते हो, अपनी कंपनी बनानी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, everybody welcomes you. The reason Malaysia has been able to attract foreign investors, उसके पीछे ये जो stability है overall, that is the key. Consistent policies, dependable infrastructure है, पावर हो गया, रोड हो गया, कनेक्टिविटी है आपकी। मलेशियंस की जनरली सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। द वे गवर्निंग द कंट्री, इट हैज ऑलवेज बीन द फोकस ऑन द फोरफ्रंट कि हाउ डू वी क्रिएट मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेसेस एंड फॉर द पीपल इन मलेशिया। पहले थाईलैंड में जब थे तो वहाँ से यहाँ पर आने के बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे महसूस हुआ वो ये कि यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट हलाल फूड हियर। Absolutely. और मेरे ख्याल से जो कम्युनिटी है यहाँ पे वो दे आर आल्सो पुटिंग सम एफर्ट्स इन मेकिंग श्योर कि हलाल फूड इज वाइडली अवेलेबल, राइट? इट्स अ डोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री, तो नेचुरली एक हलाल फूड तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल भी है। और एक और फैक्टर इसमें ये भी है कि जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, हलाल सर्टिफिकेशंस इशू होती हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की, तो जहाँ पे हलाल रेस्टोरेंट्स की सर्टिफिकेशन नहीं, वहाँ पे स्टिल हलाल फूड सर्व होता है, बट बिकॉज दे सर्व लिकर दे कैन नॉट गेट द हलाल फूड लाइसेंस। तो वो उसको लेबल करते हैं, ब्रांड करते हैं कि नो पोक नो लार्ड, सो व्हिच मींस कि इट्स अ मुस्लिम फ्रेंडली रेस्टोरेंट, बट वी डोंट हैव हलाल सर्टिफिकेशन बिकॉज हमारे जो क्लाइंटल है वो उसमें वो लोग भी आते हैं जो लिकर कंज्यूम करते हैं, तो उसको वो नहीं करते। इसके अलावा मलेशिया ने हलाल साइड पे बहुत ज़बरदस्त काम ये भी किया है कि दे हैव ब्रांडेड halal as a halal and tayyib concept. It is not just meant for Muslims, but it reflects hygiene and good quality, healthy food kind of stuff. And halal can be anything, right? I mean, आप soap consume करते हो, आप your personal care की product consume करते हो, so that also needs to be halal. उसमें non-halal elements like pork की चर्बी नहीं हो उसके अंदर, animal fats नहीं हो। तो इन्होंने हलाल तैयब का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया विच टारगेट्स नॉन मुस्लिम्स एज वेल, और वो नॉन मुस्लिम्स भी उस पर काफ़ी रिसेप्टिव है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मलेशिया ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि इनकी एक है HDFC, हलाल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आई कॉन्ट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम। तो वो हलाल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए मलेशिया के अंदर, जहाँ पे दे इनकरेज्ड कि जी आप इस हलाल इकोनॉमिक जोन में अपने बिजनेस सेटअप करें। उसके गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए। And over the years, Malaysians have developed this expertise कि जी हमारे पास SOPs हैं या guidance हैं या principles हैं कि जी हलाल business कैसे setup करना है, क्या good practices हैं उसके लिए। So now they have taken it to the next level कि they are providing consultancy also to other countries कि जी if you want to set up halal industry in your country, so we can provide you consultancy and guidance. I'll give you one small example, right? मेरे एक वर्क एक्सपीरियंस में वी वर गेटिंग हलाल एंड कोशर सर्टिफिकेशन फॉर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन oleochemicals दैट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग। वो ग्लिसरीन है, जिस तरह ग्लिसरीन इज़ कंज्यूम्ड इन फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज आपके फार्मा में भी इस्तेमाल होती है। तो यू नीड हलाल सर्टिफिकेशन फॉर मुस्लिम्स एंड कोशर सर्टिफिकेशन फॉर ज्यूज़। अब ये वो सेगमेंट्स हैं जो यूजुअली जो इंडस्ट्री होती है उस तरह से कंसिडर नहीं करती। जो एक रबाई आया हमारा विजिट करने के लिए, और एक जो हलाल उसके लिए सर्टिफिकेशन के लिए इनकी जाकिम अथॉरिटी से बंदा आया, तो दे डू अ फिजिकल इंस्पेक्शन। तो दे स्पॉटेड अ मॉप इन वन ऑफ द प्रोडक्शन एरियाज एंड दे आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम सुपरवाइजर कि जी इसके अंदर जो मॉप है इसके अंदर जो जिस चीज़ से बना हुआ है, इज़ इट हलाल और नॉट हलाल, दिस थिंग्स इंग्रेडिएंट्स जो भी उसके वो हैं। And they were not able to answer, so they held back the certification until we clarified कि नहीं जी इसमें ऐसा कोई element नहीं है। So halal, I mean it's a estimation ये है कि इस टाइम पे internationally it's a $3 trillion economy market is key, right? Market है, and by 2030 it's projected to grow to like $5 trillion US. Right. So बहुत potential भी है। मलेशिया यहाँ पे एक सिलांगोर चैम्बर है, they also set out a very ambitious plan कि they want to set up halal secretariat in Malaysia to harmonize, to standardize जो हलाल के standards हैं उसके लिए, क्योंकि इस टाइम में मुस्लिम वर्ल्ड में इवन नॉन मुस्लिम वर्ल्ड तो है ही है, चैलेंजेस आते हैं कि जी वहाँ पे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, क्राइटेरियाज डिफरेंट है, बट विद इन मुस्लिम कंट्रीज भी
they don't have mutual recognition, yeah, for that matter standards, criteria, certifications. There are differences, mutual recognition nahi hai. So yeah, I mean Malaysia is doing fantastic job in this And area. also I think like Malaysia is a very diverse country. Yes, it is a Muslim majority country, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. तो ज़्यादा यहाँ पे कौन सी जो नेशनैलिटीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं? यहाँ पे different ethnic groups हैं. So dominantly, yes, you're right. Malay Muslim is a majority group, around 50 to 60%. The second biggest ethnic majority is Chinese, ethnic Chinese, जो about 25% plus minus है. अच्छा, 25% of the total population. Total population. So Malaysia की population around 34 million. Right. So उसमें से about 50 to 60% is dominantly Malay Muslims, and then second biggest is Chinese ethnicity, तो about 25% है. Then Indians, dominantly like South Indians, जो British era में यहाँ पर आए, British colonization में, तो वो around 9% something. And then बाकी कुछ small percentage different ethnic groups हैं. So that's the constitution. But overall, yes, you're right कि it's very inclusive, and they are very I mean एक central point जो है उस पे they all agree कि जी Malaysia first, ये वो nationalism का element is very solid. जिसमें 25% Chinese हैं, तो I'm aware of the fact कि जिसमें यहाँ पे Chinese holiday या जो चाइना के अंदर जो उनके फेस्टिवल्स हैं वो भी यहाँ पर उसी तरह से मनाए जाते हैं. तो बट जब बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं तो क्या जो नेशनल हॉलीडेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बन जाती हैं? हाउ डू दे मैनेज? नहीं, इन अ ईयर देयर आर लाइक अबाउट 13 गजेटेड हॉलीडेज. अच्छा. और उसमें आपकी ईद की छुट्टियाँ आ जाती हैं. दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्स ईद एज राया. सो छोटी ईद है, उसकी 2 छुट्टियाँ होती हैं. बड़ी ईद की 1 छुट्टी होती है जो पब्लिक गजेटेड हॉलीडे है. चाइनीज़ न्यू ईयर की आई थिंक 1 या 2 हॉलीडेज़ होती हैं. दीपावली की 1 छुट्टी होती है. क्रिसमस की छुट्टी होती है. न्यू ईयर की छुट्टी होती है बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट कंट्री, राइट. सो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस जो भी होती हैं तो उसकी छुट्टी होती है. तो इस तरह कर आके फिर कोई जो मलेशिया का सेंट्रल किंग है, इट्स नॉट अ रिपब्लिक एक्चुअली, इट्स अ डेमोक्रेसी, बट हेड ऑफ द स्टेट इज किंग, सेंट्रल जो अगुंग कहते हैं उसको ये लोग. तो उसकी वो भी सेरेमोनियल हेड होते हैं जिस तरह मतलब कुछ कंट्रीज में लाइक प्रेसिडेंट, जिस तरह पाकिस्तान में प्रेसिडेंट है तो किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे स्टेट्स में सुल्तान्स हैं. अच्छा. एंड विद इन दो सुल्तान्स वो एवरी 5 years रोटेट करती है. जो सेंट्रल मलेशिया का किंग होता है, या आई मीन यू कैन से दैट दे आर गवर्नर्स एंड देन प्रेसिडेंट, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. और आपका पर्सनल जर्नी कैसा रहा है? लाइक यू बीन हियर फॉर लास्ट 12-13 years नाउ, तो how did you end up here? Pretty welcoming actually. I mean it was a career move. मैं आया था, I lived like originally I landed in Johor Bahru, which is right next to Singapore. So I've been associated with the food manufacturing, food export oriented businesses, palm oil में especially, like at least 15 years I've spent in that industry. अच्छा. So it was a career move. I was relocated to Johor Bahru. Oleochemicals plant था, palm oil based. वहाँ पे मैंने काम किया फाइनेंस में. हेड ऑफ फाइनेंस आई ओरिजिनली केम, देन आई वर्कड इन सप्लाई चेन आल्सो कपल ऑफ इयर्स. तो 6 years आई स्पेंड इन जोहर बारू, एंड देन व्हेन आई स्विच जॉब, so I moved to Kuala Lumpur. So it has been pretty welcoming, very amazing experience, amazing people. My family, my kids have practically grown up here. Yeah. So I mean it's an amazing place to be. और ओवरऑल जो यहाँ पर वर्क कल्चर है उसको आप किस तरह से देखते हैं? लाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा नेशनैलिटी से लोग जो है उनका ताल्लुक है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल मे हैव डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स एज वेल. So was it like a bit different to what you were accustomed to when you were working in Pakistan? It is actually different. Within, अगर हम बात करें Malaysian workforce की, तो Malaysian workforce itself diversified है. Like मैंने जो बताया इस तरह के different ethnic groups हैं. Malays हैं, Chinese हैं, Indians हैं, फिर दूसरे और लोग हैं. So तो first diversity is that. Second diversity is कि I mean Malaysia is an economic success story. बहुत सारी international investments हैं यहाँ पे. They have a lot of international exposure. बहुत सारे foreigners who have actually made Malaysia their home. यहाँ पे रहते हैं, इनके different programs भी हैं जो avail करते हैं. So there is all sort of diversity. And then comparing with like for example Pakistan, also इनकी women workforce भी काफ़ी ज़्यादा है. About I think close to 35-40% of the workforce जो है वो women है इनकी. Right. तो हर तरह से diversity inclusion है. So it was a very different experience, but different in a good way, in a welcoming. So I mean I got to learn a lot in that. एक चीज़ जो probably
काफ़ी different as a Pakistani when I originally came here, that kind of stands out is कि पाकिस्तान में for example work culture में आपका बॉस आपको हॉल में खड़े होकर डांट देगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का इस रीजन में, इन मलेशिया इन पर्टिकुलर, सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत कॉन्सेप्ट है. तो यू कैन नॉट रियली शाउट एट एनीबडी, यू हैव टू ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट. एंड जनरली लाइक सॉफ्ट स्पोकन है, दे आर नॉट लाइक लाउड एंड ऑल एग्रेशन, आई मीन एम्बिशियस है बट एग्रेशन, रूड एग्रेशन नहीं है, इस तरह से नहीं है. तो दीज आर लाइक some of the things and experiences, but overall it has been an amazing experience. That's why I'm still here. Yeah. और like you said कि it's an economic success story. तो आप किस तरह से देखते हैं कि what was the key tipping point for Malaysia to transform itself into a successful country? There is never a one factor, right? Multiple factors होते हैं. Starting with like, for example, leadership, the ecosystem that you build. I mean, one of the eras that stands out in Malaysia's economic success, economic development is, Dr. Mahathir's era. Yeah. So Dr. Mahathir ruled the country as a prime minister for over 20 years, probably 23 years to be precise, I guess. So वो period ऐसा है कि जिसको लोग recognize करते हैं और जिसको बहुत ज़्यादा लोग याद करते हैं. That sort of set the building blocks, and that's when they started to take off the ground, right? I mean, तो एक वो चीज़ बहुत stand out करती. तो that boils down to the point of leadership and then the ecosystem they have built. आप यहाँ पे आते हो, अपनी कंपनी बनानी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, everybody welcomes you. I mean, you come here, you bring money, you make money, you do export. I mean, they facilitate you, incentives भी हैं, overall engaging, welcoming ecosystem है. तो वो एक फैक्टर है बहुत बड़ा जो उसमें रोल प्ले करता है. उसके अलावा I think, I mean, I usually give this example, consistency of policy की बात है जिस तरह. So यहाँ पे हमने देखा pandemic में there was a little bit of a political uncertainty, certain political challenges थे, like I mean every country faces. So Malaysia had I think 3 or 4 prime ministers in a span of like 2 to 3 years. So this kind of a leadership change at the senior most level would mean कि जी policies change होंगी या economy पे impact आएगा. But I can tell you from my experiences कि we in the business we didn't feel a pinch. अच्छा. तो इनकी जो ट्रेड एजेंसीज थी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इन्वेस्टर पॉलिसीज थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया. सेकंड थिंग, यूजुअली फ्रॉम पाकिस्तान स्टैंड पॉइंट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज के हाउ डू यू राइट बैलेंस सिक्योरिटी आस्पेक्ट, द पॉलिटिकल आस्पेक्ट एंड द इकोनॉमिक आस्पेक्ट. मलेशिया में और इन पर्टिकुलर इन इस रीजन में इन जनरल, दे कीप द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एट द फोर फ्रंट. So I think it's at the end of the day it boils down to geopolitical situation also in a lot of ways, but more importantly कि how do you right balance that. So इन्होंने उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया. I mean अभी जो इनकी US के साथ tariff negotiations हुई हैं, that's a classic example. I mean they were things that they expressly said कि these are like red lines, हम इस पे compromise नहीं करेंगे US government के साथ, but we are still open to negotiate, we will not retaliate. And they negotiated, and I think they got a pretty decent deal out of all these negotiations. So that reflects leadership, ecosystem, the mindset that the country as a whole has and the leaders have. Taking you back to Mahathir Mohamad की जो example आप दे रहे थे, उसमें एक Mahathir Mohamad के बारे में जो criticism रहा है वो ये भी रहा है that he was too lenient in terms of providing subsidies to the people on the basic commodities और वो सारी चीज़. तो उसके बाद जो बाकी subsequent the rulers that came in, they also were vocal about how difficult it was for them to manage the expectations of the masses. So do you think somehow, and although आपने mention किया है कि there has been consistency in the policies as well, but subsidies के point of view से how do you see कि जो overall जो masses के ऊपर burden था उसको उन्होंने किस तरह से मैनेज किया? I'm probably not the best person to comment on that, right? So, लेकिन here's what I think, and I can share with you, right? At the end of the day, you want to create economic and growth opportunities for the citizens of nationals of your country, right? आप अपने लोगों के लिए jobs create करनी है, business opportunities create करनी है. तो वो, I mean, Dr. Mahathir and the PMs and the governments after that, everybody has done that to the best.
अभी उसमें सब्सिडी की स्पेसिफिक जो बात आती है उसमें देयर हैव बीन लाइक चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि जिस टाइम पे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, हाउ मच कैन यू एक्चुअली अफोर्ड टू पे आउट, एंड देन समटाइम्स डू यू वांना सब्सिडी के बारे में कि जनरल जिस तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आल्सो डोंट एनकरेज दैट कि जी ये तो इट्स लाइक क्रचेस यू आर गिविंग टू द पीपल, दे यू मेकिंग देम टू डिपेंडेंट. सो हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट आई वुड से कि जो इन्होंने द वे गवर्निंग द कंट्री एंड द इकोनॉमिक्स और बिजनेस चीज़ें कर रहे हैं उसमें it has always been the focus on the forefront. How do we create more economic opportunities for the businesses and for the people in Malaysia? Right. And in your experience also, जो the reason Malaysia has been able to attract foreign investors, उसके पीछे ये जो stability है overall across all these sectors, that is the key in a way, right? That is one of the key elements. Yes, I would say कि consistent policies, business-friendly policies, यहाँ के लोगों की, Malaysians की generally in your interactions you would also have experience कि soft skills बहुत अच्छी हैं. Yeah. And soft skill does not specifically mean कि they can speak English, but how do you interact with the people, how do you handle different situations, तो वो factor है. Plus dependable infrastructure है, पावर हो गया, रोड हो गया, कनेक्टिविटी है आपकी, आप बिजनेस डेवलप करते हो किसी एरिया में, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें गवर्नमेंट क्या फैसिलिटेट करती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट अवेलेबिलिटी है. आई यूजुअली गिव एन एग्जांपल, मलेशिया का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है HRDF, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंड. तो देयर इज़ अ रेगुलेशन कि एवरी कंपनी हु एम्प्लॉयज़ द पीपल, तो आपका जो पेरोल है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, आई थिंक इट्स 1% और समथिंग लाइक दैट, दैट एवरी कंपनी सपोज टू पे एज अ फी to that HRDF fund. So it's a cost to the business, right? But उसका concept ये है कि you can claim back that money when you spend some money to train Malaysians. Right. And essentially the idea is कि आप upskill कर रहे हो तो लोगों को, या आपने कोई training room बना लिया, या आप within Malaysia आपने कोई training कर ली. तो idea is कि जी हम आपसे पैसे ले रहे हैं, but we are in a way, in a good way, we are forcing you कि you can plow back this money by training Malaysians and upskilling. So I think that's the one of the key, very good policies and things that I've seen here. Overall जो यहाँ पर priority sectors कौन से हैं जो कि export में इनको मदद करते हैं? Electronics, उसमें semiconductor है, एक ज़माने में I mean अभी भी वो चीज़ है, जैसा for example Philips इस तरह के companies के यहाँ पे manufacturing units होते थे, तो electronics is the leading one. बाकी फिर इनका tourism है, palm oil sector है. Malaysia is world's second largest palm oil producer, about like 19 to 20 million tons annually production होती है इनकी. After Indonesia, this is the second biggest in the world. तो ये दो तीन sectors हैं जिस पे बहुत ज़्यादा focus होता है. I mean, I'll just give you an example. Tourism कितना बड़ा है? I think it's $50 billion probably, if I'm not mistaken, इनका revenue वहाँ से generate होता है. अच्छा. और द टूरिस्ट इनफ्लो, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर जो मलेशिया आता है हर साल आता है, वो अराउंड 20 to 25 मिलियन आता है. आई मीन डिपेंडिंग ऑन लाइक, आई मीन पेंडेमिक इट ड्रॉप डाउन बट नाउ इट्स पिकिंग अप अगेन. सो जस्ट थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट के 34 मिलियन का मुल्क है, एंड in about 1.5 years or less than 1.5 years, the whole country its equal population travels in and out of Malaysia. Wow. So yeah, I mean these are the few sectors जो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करती है काफ़ी. इस टाइम पे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पे बहुत काम हो रहा है. सो दीज आर लाइक सम ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज. फिर पाम ऑयल में भी दे आर इनकरेजिंग डाउन स्ट्रीम वैल्यू एडिशन स्पेस में, दे आर इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रोथ, सो जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है. राइट. और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उसके बारे में कुछ बताएं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 150,000 पाकिस्तानी कम्युनिटी मलेशिया में एज अ होल, जो इनफॉर्मल हमको स्टैटिस्टिक्स पता है. उसमें से अबाउट 2,000 to 2,500 आर लाइक प्रोफेशनल्स, पीपल लाइक मी जो किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, C-suite, CFO, CEOs हैं, कुछ बहुत अच्छे सीनियर लेवल पे हैं रीजनल रोल्स में. तो अबाउट 2 to 2,500 आर दीज पीपल. Then close to 5,000 is international students across 13 or so universities in Malaysia. तो पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और बाकी फिर आपके हैं जो ब्लू कॉलर जॉब्स में हैं, या कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं इसके अलावा जिनके अपने बिजनेसेस हैं. यहाँ पे KL में एक हॉटस्पॉट है, मस्जिद इंडिया का एरिया है. फिर KL के आउटस्कर्ट्स पे है निलाई का एरिया, वहाँ पे हैं. So there is like SME businesses, कुछ बड़े businesses भी हैं, large corporations भी हैं.
So that's the overall constitution of Pakistani community here. और कोई पाकिस्तान से लिंक्ड कोई बिजनेस एसोसिएशन वगैरह हैं या जो कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं वो भी क्रिएट किए हुए हैं लोगों ने? So I've been part of Malaysia Pakistan Business Council. तो इसकी भी थोड़ी स्टोरी ये है कि 2006 में कोई पाकिस्तानी ओरिजिन मलेशियन थे. I mean he was second or third generation Pakistani origin Malaysian. He started with an idea कि जी कोई business council या कोई platform होना चाहिए. So एक informal something started back in 2006. 2013 में it was formally registered with the registrar of Malaysia as a non-profit organization, Malaysia Pakistan Business Council. उसमें बस activities up and down होती रही. Then I think 21-22, I mean this was the period when I started engaging with them. तो उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ ने पिकअप किया कुछ. मैंने भी इस टाइम उसमें इन्वेस्ट किया उस चीज़ों के अंदर. सो वॉलंटियर बेस पे दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ run by led by an exco which includes like our Malaysian colleagues and friends and कुछ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे बेस्ड हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स हैं जो यहाँ पर हैं. तो दैट एक्सको बेसिकली रन्स दैट. एंड फिर बाकी हमारी मेंबरशिप बेस है. इट्स लाइक मोर देन 50 मेंबर्स, मलेशियन एंड पाकिस्तानी बिजनेसेस इन मलेशिया जो उसके मेंबर्स हैं. तो दैट्स वन ऑफ द और वैसे ओवरऑल जो मलेशिया और पाकिस्तान का बायलैटरल ट्रेड है वॉल्यूम वो हाउ इज इट लाइक? I mean my bias is कि it's less than what it's supposed to be. I mean potential is much bigger than that. Right. So bilateral trade जो है वो it's like under $2 billion. Okay. और उसमें जो मलेशिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है वो it's about $1.6 billion around there. And पाकिस्तान की exports to Malaysia are like $300 million. Right. पिछले 2-3 सालों में हाई कमीशन ने बहुत एफर्ट्स की, मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने काफ़ी एफर्ट्स की. यहाँ से इनफैक्ट काफ़ी डेलीगेशंस गए पाकिस्तान कुछ इवेंट्स में. अभी भी एक नवंबर में जाने वाला डेलीगेशन. तो उसमें एफर्ट्स हो रही हैं कि बायलैटरल किस तरह से टूरिज़म, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड इंक्रीज़ हो. मिड सितंबर में भी एक कराची में 3-day इवेंट है जो मलेशियन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी है, मार्ट ट्रेड, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कराची में. 3 days इवेंट 13 सितंबर. सो वो उसका भी आइडिया है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़े. बैक इन 2022 एक इनिशिएटिव मैंने चैम्पियन किया था टूरिज़म से रिलेटेड. तो इसमें हम लोगों ने यहाँ से भिजवाए थे अबाउट 20 मलेशियन टूर ऑपरेटर्स टू नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. They went there, they spent like 10 days, they made their own local contacts, hotels के साथ arrangements उन्होंने किए, सब जो भी अपने agreement sign किए. And after that we saw a big uptick in Malaysian tourist traffic to Pakistan as well. So in a way it was a new destination for a lot of Malaysians. और Malaysians travel a lot. Yeah. साल में 1-2 दफ़ा इंटरनेशनल टूरिज़म एंड डोमेस्टिक टूरिज़म बहुत होता है इनका. फिर हलाल टूरिज़म के कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. People like to travel like before उम्रा या हज, they take a trip and then they go for उम्रा और हज जो भी जाते हैं उसके लिए. तो हलाल ट्रिप का मतलब ये है कि they will go for उम्रा या हज के लिए. और उसको उस तरह से ब्रांड करते हैं, बट आइडिया इज के हलाल डेस्टिनेशन में जाएं. अच्छा. फॉर एग्जांपल जापान जो भी इस रीजन में, इट्स अ नॉन मुस्लिम कंट्री, बट जापान जो है हलाल टूरिज्म को बहुत सपोर्ट कर रहा है. राइट. चाइना इस टाइम पे बहुत सपोर्ट कर रहा है. I mean, I have a Malaysian friend in the tourism industry. This year, in the last 12 months, he has made two subsidized trips or sponsored trips to China to visit Muslim sites or Islamic related sites in China. And the idea is कि tourism, Malaysian tourist flow China में बढ़े. और उन्होंने I mean, पिछले 1-2 सालों में इन्होंने वीज़ा भी काफ़ी ईज़ किया between China and Malaysia. Arrival पे like अभी तो I think probably 90 days in a year they can stay and they don't have to apply for a visa kind of a things. Right. So that's basically Islamic sites and culture से related जो है tourism को promote कर रहे हैं. And on the bilateral trade again, जो कौन से ऐसे sectors हैं particularly in Malaysia, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है मलेशिया में वैसे भी कम है एंड आई थिंक कि उसमें रॉ मटेरियल ज़्यादा होंगे, फिनिश्ड गुड्स या वैल्यू एडेड जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं वो कम होंगी. तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें देयर इज़ अ पोटेंशियल कि पाकिस्तानी जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं मलेशिया में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, प्रोडक्ट या सर्विसेज का पोर्टफोलियो क्या है. तो अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी हैव डिस्कशंस तो वी स्ट्रगल टू फाइंड अ वैल्यू एडेड या हाई वैल्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में. हमारे आम हो गए, आलू प्याज हो गए, जेनरिक प्रोडक्ट्स, कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स ज़्यादातर, टेक्सटाइल हो गया. तो उसमें
कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसमें बेसिकली यू आर कम्पीटिंग विद इंडिया एंड चाइना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि दे आर मोर कंपेटिटिव ऑल्सो, उनकी सप्लाई साइड भी स्ट्रॉन्गर है, मार्केट कनेक्शन स्पेशली इन आसियान में उनकी ज़्यादा है, बिकॉज पाकिस्तान की उस हिसाब से इंगेजमेंट उतनी नहीं रही। आई मीन जो इफ़ आई कंपेयर इट बेंचमार्क विद चाइना एंड इंडिया, तो दे हैव मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड अदर रिलेशंस इन एंगेजमेंट एंड पेनिट्रेशन इन द मार्केट। सो हमारी एक स्ट्रगल होती है कि जी क्या प्रोडक्ट या सर्विस करें। तो आई मीन इफ़ यू आस्क मी व्हाट I have kind of narrowed it down to 2 or 3 things basically. When we position something in our discussions with our Malaysian friends, so we tell them कि जी आप whatever you're sourcing, whether it's a product, talent, services from say China and India, consider Pakistan as alternative source of supply. So एक ये positioning है हमारी। Second, I think जो area जिसमें growth potential और value ज़्यादा है वो है आपका digital side पे, IT side पे। That's one. Second is export of accounting services, for example. I am a chartered accountant by training. So एक space जो मैंने sort of identify की है कि इसमें एक scope है कि इस टाइम पे जो services, for example इंडिया या फिलीपींस दे रहा है पाकिस्तान, मलेशिया को या इस तरह किसी रीजन में और countries को, पाकिस्तान में भी as per my observation and learning in the last few couple of years especially, पाकिस्तान में वो muscle built हुआ है, वो capacity building हुई है। So I think it's we're trying to socialize, educate, create awareness. बाकी फिर आपका tourism है, क्योंकि like I said कि Malaysians travel बहुत करते हैं। So I think Pakistan is a cost competitive and a shopping friendly destination. People to people, government to government, Malaysia और पाकिस्तान का बहुत अच्छा warm relation है। They always had very good relations. सो आई थिंक ये स्पेसेस हैं जो हमने ब्रॉडली आइडेंटिफाई किए। बाकी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए, वो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, बट दैट टेक्स अ बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कि जी आप लाइसेंसिंग लें, फिर यू आइडेंटिफाई द क्रेडिबल सप्लायर। सो एक वो एरिया था, हमने उस पर कुछ काम किया था। मीट एक्सपोर्ट के लिए कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स पे इनिशिएटिव्स हुए थे यहाँ पे। तो या मीन दीज आर फ्यू एरियाज जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, but it requires time, patience, financial investment, time investment, right. Institutionally for a longer term benefits. But yeah, I mean, these are some of the spaces that I have come across in my experience. And if somebody wants to start a business in Malaysia, is it easier जो overall visa process है, business visa process है, या जो regulations हैं to start a business, how is that? See, forming a company is not a problem. It's pretty easy, straightforward. आप business register करें, you have a legitimate business interest and this thing. So I think that's relatively straightforward. Coming to the second part, visa, या उसमें भी they facilitate, but again realistically and practically any country would consider that thing. That depends on the size of investment that you're making, Right. the kind of visa you're applying, how many people you're bringing, because at the end of the day, any country would want, of course, want to welcome foreign investment, but at the same time, they would want to create local jobs or jobs for the local people. So how do you balance and position that? So directionally, not a big, huge challenge, Right. but I think devil is in the details कि अब क्या business है, आप कितने visas की बात कर रहे हो, क्या skill level की बात कर रहे हैं, and is that talent not available in Malaysia, and all those things. और इमिग्रेशन जो है वो मलेशिया के लिए, अगर if somebody wants to study here और स्टडी के बाद जो वर्क परमिट है, क्या वो इजीली मिल जाता है? Work permit is employer dependent. Typically, as per regulation, there is a certain quota that is allocated to the foreign investors, किसी organizations को कि जी आपको क्यों foreign talent चाहिए. So एक कैटेगरी प्रोफेशनल्स की आ गई, आप इसमें आपको मिड करियर, मिड लेवल या सीनियर मैनेजर लेवल पोजीशन, लीडर्स की पोजीशंस के लिए चाहिए. एंड सेकंड इज़ ब्लू कॉलर, जिसमें आपका ब्लू कॉलर जॉब्स है फैक्ट्री में, तो उसके लिए भी इनके कोटा का प्रोसेस है, जिसमें कुछ पाकिस्तान से भी आते हैं, बट डोमिनेटली नेपाल से और बांग्लादेश से ब्लू कॉलर लेबर बहुत आती है. दैट्स हाउ द प्रोसेस और दैट visa allocation works in that case. So it's not pretty straightforward. I mean, you do need, even after you complete your education, तो उसके बाद भी you need to be employed, and it depends on the employer. Exactly. Right. So then स्टूडेंट वीज़ा का I don't think there is a challenge. जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस है, इमिग्रेशन के साथ पोर्टल है उनका, तो वो I think that's the process that you follow. Right. But
जिस तरह फॉर एग्जांपल आई थिंक यूके में प्रॉब्ली इस तरह से है कि यू आर अलाउड सर्टेन आवर्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट वीज़ा to do jobs, right? I mean, students, they work for their pocket money and they study, right? तो यहाँ पे वो concept नहीं है. So if you work, you need a separate visa. Somebody needs to sponsor that. There has been like a subtle focus of Malaysia जो education के ऊपर ये कर रहे हैं. There are as a result बहुत सारे students, like you mentioned, 5,000 students are currently studying in Malaysia as well. There must be जो कोलैबोरेशन का पोटेंशियल होगा बिटवीन मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ एंड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़. तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम है एजुकेशनल सेक्टर में, आप उसको किस तरह देखते हैं? आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस जिस पे देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क. स्कॉलरशिप से प्रॉब्ली आई वोंट बी एबल टू कमेंट मच बिकॉज आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स, मुझे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं उसका. बट डायरेक्टली येस, देयर आर लाइक close to 5,000 Pakistani students across different universities. Malaysia का जो ecosystem है उसमें there are public schools, there are private schools, there are international schools. I mean A grade, B grade schools है. They have international faculty, foreign teachers हैं इनके. So international universities हैं जिनके campuses हैं यहाँ पे मलेशिया में. So ample opportunity for anybody who wants to study here. There are a couple of universities like international UK or Australia की Monash University है, and then you can go to Australia also for that matter for a couple of semesters and you get more additional exposure, right? So इस तरह की opportunities बहुत हैं यहाँ पे. एक और I think untapped area जो है वो है collaboration between universities. So उसमें यूनिवर्सिटीज़ का R&D होता है, देन इंजीनियरिंग साइड पे या यहाँ पे मलेशिया में पाम ऑयल सेक्टर. आई मीन रिसेंटली आई हैड अ मीटिंग विद द folks from University of Pahang, right. And they are working on valorizing some of the byproducts coming out of palm oil. The palm oil की value chain में जो पूरे processes होते हैं उसमें. So then we had a good discussion and then we were connecting them with the chemical engineering universities in Pakistan कि जहाँ पे they can do joint research. Sometimes they have funds also. And like typical conditions होती हैं कि जी अगर if I have like 1 million ringgit funds for this R&D project allocated, so you match this funding, maybe we can execute that within Pakistan in university. फिर आपके talent exchange होता है. तो इस तरह की opportunities जिसमें है मलेशिया की ecosystem में education में. और employability के chances कैसे होते हैं after you complete your education here from a Malaysian university, and there are some really good universities as well. RMIT is one of them. So how is the employability after completing your education here overall in ASEAN or elsewhere? Couple of things in that, right? So university provides you an ecosystem, आपको एक environment देता है depending on which university, और आपने उसमें क्या किया. तो my bias is कि a lot depends on the student as well. Yeah. कि उसमें कितना पैशन है, उसने कितनी एफर्ट लगाई, कितना एम्बिशन है उसके अंदर. So I think we need to look at both the factors. So assuming एक एवरेज स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ के I mean makes decent grades, so then the next question is कि if he or she is looking for a job within Malaysia, so then okay, what is different value proposition that you have to offer कि जी आपके employer या potential employer आपके लिए visa apply करे. So I think that aspect is there. Typically जो मैंने देखा है वो students यहाँ से पढ़ के कुछ लोग पाकिस्तान वापस जाते हैं, कुछ लोग further up they move like westwards. I don't see many cases कि जो who have stayed back and they continue working in Malaysia. Maybe there are a few cases like who set up their own businesses क्योंकि entrepreneurship का काफ़ी ज़्यादा culture है यहाँ पे, encourage करती है government. SME sector GDP का बहुत बड़ा contributor है यहाँ पे. So वो वाला aspect उसमें है employability के standpoint से कि when people students complete their studies they typically move. But उसमें भी हमारी कुछ डिस्कशंस बिजनेस काउंसिल में और डिप्लोमेटिक मिशंस के साथ हुई थी यहाँ पे कि जी इवन इफ द स्टूडेंट्स हु हैव स्पेंट लाइक 3 to 5 years in Malaysia, they don't stay back or they don't work for whatever reasons. I mean कुछ लोगों की ऑलरेडी जॉब होती है बैक एट होम. तो they are a strategic asset which we have not really tapped for or engaged for in increasing the bilateral trade investment. क्योंकि जो बंदा 3 साल या 5 साल या 7 साल मलेशिया में रहता है वो they definitely make international friends. Yeah. They definitely make Malaysian friends. कुछ लोग यहाँ पे I mean they learn the language as well. So if let's say पाकिस्तान ने trade investment bilaterally बढ़ानी है तो I think they could be a strategic asset to be specific engaged through a program or something कि जी हमारी जो मलेशिया पाकिस्तान ट्रेड है उसमें you play a role in that. I mean you create jobs for them and all those. So I think that's one aspect जिस पे कुछ discussion हुई.
There can be some more structured work that can be done in that space. But that's how I see the employability aspect. Overall, your education increases your employability, but yeah, I mean, devil is in the details. Coming back to जो overall bilateral trade का जो पाकिस्तान का और मलेशिया का element है उसमें earlier SARC का Pakistan was an active member. I think SARC still exists, but बहुत ज़्यादा actively they're not contributing, and I think one of the reasons why SARC has not been able to perform to its optimum level is because of the conflict between India and Pakistan being the members, and that created a lot of hurdles. As an alternate, ASEAN is also an association of 10 countries, and they are doing quite well compared to SARC. तो आसियान का जो स्ट्रक्चर है एंड मलेशिया इस साल जो है दे आर ऑल्सो चेयर फॉर आसियान, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन? सार्क का तो आई डोंट नो अ लॉट अबाउट दैट, एंड यू आर राइट कि बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स उसमें आई मीन वी हैवंट सीन much productive outcomes coming out of that, right? So, but at the end of the day, it's a platform and organization there. ASEAN is a very good example actually, Association of Southeast Asia Nations, जिसमें आपका मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, I don't know if I missed any country. So, but 670 million population and $4 trillion GDP है ASEAN nations as a whole. So, it's a big economic, it's sizable economic bloc to be engaged with. I mean, as much as I know, Pakistan has been trying to become a full dialogue partner in ASEAN. I'm sure, I mean, there are discussions going on around that, and I think that's for the Ministry of Foreign Affairs and our diplomatic missions. So I'm sure they will make it happen. I mean, I can talk about one of the initiatives that I worked on. I mean, so by training, I'm a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. So one of the things I did was, along with some of my colleagues here in this region, my fellow CA members here, so we co-founded a ASEAN chapter of ICAP members. So we have about 50, a little over 50 probably chartered accountants working in mostly in corporate jobs. So हमने एक ये chapter बनाया. We got approval from ASEAN Secretariat Jakarta, and they had this declaration and all those things कि भी क्यों बना रहे हो, because ASEAN is IP protected under Paris Agreement. So since we were picking up this name for this organization, non-profit organization, so we needed to have their approval for that. So उनसे approval ली, diplomatic missions ने हमको बहुत help किया इसके अंदर, especially like Madam Amna, she was the High Commissioner here. She is the co-founder with us for that chapter. मैडम रुखसाना सिंगापुर में थी, अभी थाईलैंड में है, अमेजिंग लीडर. अभी मिस राबिया है सिंगापुर में. देन यू नो बल्ती साहब होते थे इंडोनेशिया में एम्बेसडर पाकिस्तान के, एंड फिर बाकी एम्बेसडर्स के साथ भी हमारे फिलीपींस और बाकी जगहों पे भी ओवरऑल एंगेजमेंट हुई, डिस्कशन. सो दे मीन ऑल ऑफ देम प्रोवाइडेड अमेजिंग सपोर्ट. सो वी co-founded this ASEAN chapter of ICAP members with two purposes. Number one, creating a platform for Pakistani CA Pakistan, where members can network with the broader finance community in this part of the world. So that was one purpose. Professional engagements होती हैं, career development, CPDs type की चीज़ें होती हैं. We do webinar and stuff like that from time to time. Second ये था कि how do we sort of facilitate institutional engagement between peer accounting bodies of institutions in Malaysia and that in Pakistan, which is mainly ICAP. So उसमें we were able to initiate discussions with the Malaysian Institute of Accountants, CA Singapore, इंडोनेशिया में ASEAN Federation of Accountants से भी मुलाकात हुई, बात हुई, उनकी जो अकाउंटिंग बॉडी उससे बात हुई, रॉयल थाईलैंड इंस्टीट्यूट उनसे बात हुई, वियतनाम CPA जो उन लोगों से बात हुई. तो we were able to initiate institutional discussions because, I mean, I have a day job and we do this on a volunteer basis work that we do for that. So we can only do so much, but more importantly, the institutions who have resources and whose job it is, so we facilitate. Since we are in the region, we are boots on the ground. So हमने वो institutional connection establish करते हैं. So we work around these two objectives on the ASEAN chapter of ICAP members. So probably, I mean, my bias is, or my understanding is, it's probably one of the first, if not first, initiative
and tangible action which aligns with government of Pakistan's ASEAN action plan. तो क्या sector wise do we need to create similar organizations like the one you created? Yeah, I mean, tough to say, but basically I think the idea is this कि okay, we have to look at the we think, okay, what's the purpose or what you'll achieve out of becoming a full dialogue partner of ASEAN. So one is that you become part of an organization who primarily focuses on economic community concept within ASEAN and then broader ASEAN. अभी इनका ASEAN plus भी है जिसमें Japan, China and I think South Korea आता है. So the idea is कि how do you economically engage, and उसमें फिर आपके FTAs होते हैं, आपके फिर बाकी engagements होती हैं, professional visas की arrangements होते हैं. तो unless and until you become part of that, you don't get to avail all those benefits, right? I mean, for example, in our case, India probably, if I'm not mistaken, they are full dialogue partner. Yeah, they have reasonable influence or kind of engagement with ASEAN, right? So आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, फिर पॉलिटिकल कुछ चीज़ें आती हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के उसमें, तो उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं आपको. तो दैट ओपन्स अ विंडो फॉर दैट, दैट फैसिलिटेट्स दैट. Now, how do you make it happen? Yeah, I mean, maybe answer could be that we need maybe more organizations like ASEAN chapter of ICAP members, which is the first Pakistani organization under this label and with this goal and objective and vision. Yeah, maybe that's the answer. Maybe we should have more, maybe around IT or business ki honi chahiye. Or other things could be that what's the value proposition, right? For example, it's like probably a salesmanship ke why would ASEAN be interested in engaging with Pakistan? Yeah. So I think that's more on Pakistan's side to make a sales pitch and what value do we bring to the table. So I think that's where the action plan comes into play. कि जी ठीक है, हम क्या benefit दे सकते हैं. I mean, in my thought process is कि I mean, because of the rupee devaluation, yeah, I mean, it's not great for the country and economy. It doesn't look like a good indicator, but yeah, I mean, it brings you cost competitiveness from international standpoint. So maybe that could be one value proposition कि we provide you a cost competitive operating base. Number two could be that, oh, we have borders with like 5 countries. So I mean, okay, with India we don't have great relations and the border is not working from an economic standpoint. But yeah, then you have 2,400 kilometer border with the Afghanistan, maybe I think 500 kilometer with China, then you have 700, 800 kilometers border with Iran. So yeah, I mean, we provide you access to that landlocked markets through Pakistan into Afghanistan and Central Asia, which is again like, I mean, 134 million people market, right? So Iran 85 million people market. So एक ये value proposition हो सकती है. Then Pakistan is a country of like around 240 or 50 million people, right? Or we know that 60% of the population is under 30 years of age. So that could be another value proposition. We have a huge talent pool who can provide you IT services, outsourcing of accounting services. So ये एक access to the talent pool हो सकता है, क्योंकि इस part of the world में developed economies में generally ये भी होता है कि आपकी you have aging population proportion is higher. आपका population growth rate is lower compared to like in countries like Pakistan जहाँ पे काफ़ी high है. So I mean, these could be few things top of my head, but yeah, I mean, it boils down to how institutionally and strategically the professional bodies and institutions, they position it, use it for this is part of ASEAN action plan and this is what we're doing about it. So yeah, I mean, that's how I see it. I think like you have really packaged it in a way that it makes perfect sense now, because we also need to come up with the sales pitch, what's in it for them. But yeah, I mean, I was just thinking that there is this huge probably opportunity that Pakistan is missing out on, and having independent organizations or individuals creating those organizations like you did, I think that is probably the way forward until there is any diplomatic breakthrough. Usme, I think my learning has been that there are two important aspects to that, right? So one is that you have to resource these organizations adequately. So for example, ASEAN chapter hai, Malaysia Pakistan Business Council hai, we work on, I mean, on a shoestring budget we operate, and we invest our own time. We don't have a full-fledged secretariat. So we are driven by
our passion or these kind of things. We don't have any commercial interest or gain out of that coming for us. So I think that's one very important thing. How do you resource that? And number two is how the overall strategic approach is structured, and how do you pull all the strategic levers together, be it like ASEAN chapter, Malaysia Pakistan Business Council, diplomatic mission, Ministry of Commerce. So more structure, when all of these institutions pull their weight in a coordinated fashion, then it will make it work. And I think then at the heart of it, there needs to be a commercial value proposition which will make it sexy and interesting for everybody, all the stakeholders. This is something we should seriously engage. Otherwise, there is no reason to invest time in that. This ASEAN summit probably happening in Malaysia this year. Is Pakistan somehow still part of that? I believe as an observer and a dialogue partner. So recently there was I think in July probably, so Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar, he was here. So minister level, senior government leadership level engagements are happening. We are hoping and expecting that there will be a Prime Minister level engagement down the road this year. Because last year or early this year, Malaysian Prime Minister visited Pakistan. So we are hoping and expecting that it will be reciprocated. So engagement at this kind of senior leadership level really helps to take it forward. And yes, I do see that traction in this engagement. So this year I was like checking out some of the promotion that is going on ASEAN के बारे में, जो ASEAN Summit 2025, and the focus area या theme इस दफ़ा जो है वो उन्होंने रखा है sustainability and inclusivity. तो इसके बारे में आप बताएं कि like what's the reason behind it? उसमें inclusivity, there are multiple dimensions to that. एक gender aspect है, एक है geopolitical aspect है. So Malaysia typically और इस region की भी generally approach जो है वो engagement और collaboration वाली होती है. So that is in that context कि we are inclusive and we make all the different ethnic groups and different nationalities, different countries, and take them forward. So inclusivity in that way. Sustainability more in terms of sustainable growth, environmental and climate sustainability. So those aspects, responsible tourism, sustainable tourism. Malaysia में agri sector काफ़ी बड़ा है. जैसा for example palm oil है, तो उसमें there is a traceability, responsible, sustainable practices and palm cultivation कि हम forest को और बाकी चीज़ों को damage नहीं कर रहे. तो वो aspects हैं. But if we zoom into one of the gender aspects, तो उसमें Malaysia की बहुत strong workforce है women leaders की. Right. It is considered one of the safest countries for tourists, for women leaders. That's why you see a lot of women leaders. I have seen in my organization also where we had a operations manager or factory manager who was a lady, and then she took an initiative to form a committee within that women in operations की उसने committee बनाई. तो ये एक इंक्लूसिविटी का एस्पेक्ट है. फिर ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि वहाँ पे इन्होंने नर्सिंग रूम्स बनाए हैं फॉर मदर्स कि जी ठीक आप आए काम के लिए आए, बट देन वी फैसिलिटेट यू इन दैट वे. देयर आर लॉट ऑफ विमेन लीडर्स who work side by side. I've seen CEOs, I've seen mid-level managers, my colleagues, my bosses, and I've also seen women driving a lorry with a 40-foot container on it. So it's all across. Gender is probably one aspect I can zoom it into in that way. And we can also relate to the fact that it's a Muslim majority country, and women participation is that high. So Pakistan में there is a need to actually have more of that. Pakistan can take a lot of inspiration from here because यहाँ पे जो examples set हो गई हैं, it's up to the individual कि how you wanna live your life or what value system that you follow, but people are not going to judge you for that. There are certain norms you have to accept. For example, you cannot be disrespectful to the religion or to the king or to the local culture sensitivity. So you have to be always intentional about that. But generally, people come together. They don't judge them for what they wear, how they look like, more on the talent and more on integration and inclusivity. Nobody imposes their own beliefs onto the others. Not really. It's more of a respectful engagement.
and like I said earlier also कि भी एक self respect का element यहाँ पे है, so you have to be very mindful about that. That's very much part of the culture. For anybody looking to either migrate to Malaysia for work or for studies, may it be like, कोई अगर business start करना चाह रहा है, what advice do you generally give out to them? I would say कि be careful with the जो fake agents हैं, so don't lose your money and, and peace of mind with shady people. Do your own research and homework directly with universities or the credible people that you can really validate and trust. So अपनी due diligence करके आप आए. Overall, whether you're coming for business, for work, for tourism, for study, pretty welcoming part. You will have a good experience here. Facilitation मिलती है depending on if you're an investor या आप जैसे भी आना चाहते हैं तो, but do follow the proper channel in that way. But overall, I mean it's pretty welcoming and straightforward. I mean vis-a-vis especially Malaysia का it's relatively easier for Pakistani passport. I think e-visa अभी आजकल थोड़ा सा it's been a bit difficult for some reasons, but generally it's easier. Yeah. Right. And personally, in your career so far or in your personal life, what's the best advice that you have ever received? I'm fortunate that I got opportunity to work with some very good leaders. I had some very good mentors. I mean, I think it's keeping the positive mindset, challenging yourself, curiosity. I mean, few words that I can pick up to describe that thing. Collaboration. You always learn from somebody something. इस region में अगर particular बात करें तो one of the thing that stands out for me is more of a collaborative culture. People come together, collaborate, they support. So I think that is something, and probably that stands out for me because we come from the part of the world which has more conflicts, more regional conflicts, be it like Afghan war or war on terror or conflicts with India. Yeah. So that kind of stands out for me कि यहाँ पे easy travel है within ASEAN nationals के लिए, and their discussions are mostly around trade and economics and tourism, people to people contact. So इस तरह की चीजें हैं. Culturally, I mean there are differences. I mean across ASEAN when you travel, but overall there is an acceptance and respect and understanding for a lot of things. And any book that you recommend everyone to read? There can be a lot of books. I mean I read different books ranging from politics to economics to other things. Maybe one of the books I really enjoyed recently reading was World is for Sale. So it is World is for Sale. World is for Sale. It is authored by two Bloomberg journalists, and it talks about the global supply chains and the agriculture and commodity supply chains in the world. Because it's there is a supply point and then there is a demand. एक मुल्क या एक रीजन एक चीज़ प्रोड्यूस करता है. अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग इन एग्रीकल्चर एंड देन दे एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ सोयाबीन और सनफ्लावर. सिमिलरली रशिया या मिनरल रिसोर्सेज हैं, so they produce a lot and then there is demand in other country. So how has it evolved over time and what are the big guns, big companies or corporations who are doing that? So I think that's one book I really loved reading recently, and it also, like in the context of like major disruption that we had during pandemic, so it makes it more relatable. फिर जब रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो the whole global supply chains got disrupted. यूक्रेन से जो आपका सनफ्लावर एक्सपोर्ट होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. आई थिंक फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर में यूज होता है उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लाई पॉइंट. सो द होल थिंग वाज डिसरप्टेड एंड देन यू start looking at the bigger picture. How do the supply and demand points connect? Well, sir, thank you so much for your time. It's a pleasure talking to you and meeting you, and personally I've learned a lot from a lot of insights that you shared. So thank you so much. My pleasure. Thank you for the engagement, and I mean I think we need to highlight more of the ASEAN region and opportunities there. Definitely, we are up to it now. Thank you.